Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. Sunday evening, seeing Hyderabadis in an exhibition before Maghrib is a very big challenge that the team of Hyderabad Expo has covered. MashaAllah, it's really commendable. Ladies, gentlemen, kids, everybody. I'm seeing the stall fully occupied, total rush hai. It shows the enthusiasm and MashaAllah, the way it has been handled, this exhibition. Last year first expo tha, education expo, and now they have transformed it to Hyderabad Business Expo. Ye transformation hai. This is basically how Muslims have transformed their mindset to understand the need of the hour, what is actually business. See, business, I have selected the topic, business is battle. Business jo hai ek jang hai, agar aap dekhenge. So you cannot rest, you cannot stop. You have to continuously fight. There is no end of it. As far as you want to be there in the market, you have to fight. Business is a battle end of the day. So I'll take you fast forward just to take the definition. If you read the definition, very simple English language definition. The term business refers to the organized efforts and activities of individuals or organizations to produce, sell or exchange goods and services in order to earn a profit or to achieve a specific goal. So this is the basic definition. And now what I'm trying to do here is, I'm going to the roots. मैं बिल्कुल आपकी बुनियादों को छू रहा हूँ. I want you to understand the very basics. What we do is, हम क्या समझते हैं? We do MBAs, we do BEs, we do graduations, we understand everything. It's not that. Life is a learning process. Each day, each week, each month, each year, you have to learn. There is no end of learning it. So आप कितना भी educated हो, there is no end to learning of it. In essence, business is a dynamic and multifaceted concept that drives economic growth, fosters innovation, and shapes societies basically. So अगर आप business करते हैं तो इससे आपकी society को impact होता है. You need to understand. आप अकेले नहीं हैं. Your customers are impacted by it. Your partners are impacted by it. Your products are being shaped into the market. आपकी goodwill बनती है. अच्छी हो या बुरी हो, आपकी कुछ ना कुछ एक goodwill बनती है. So it's not just about making money, but also about creating strong value, solving problems and improving lives. So you have to make sure you're doing something or the other like this. Now there are more than 50 stalls here. अगर आप सबसे जाके पूछेंगे, the stall owners, they are facing some of the other challenges. Financial risks आपको analyze करना पड़ता है. You need to be hard-working person. आप soft working नहीं रह सकते. You cannot say कि मैं office खोल दिया, बच्चों को hire कर लिया. I've hired the HR team, I've hired the financial team, I have the marketing person, काम चलेगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता. No organization have built up themselves with just opening a company. There has to be complete involvement. People for businesses, I know an entrepreneur here, my favorite person, one of my best friend, who is one of the partners here, Full Stack Academy के जो CEO है and co-founder is Abu Bakr. Just ask him how many hours he works. He works for 18 hours to 20 hours a day. So hard work in the very initial period is the most critical part. That will describe you. That will describe your future. आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मेहनत से मैं चाहे उड़ सकता हूँ या फिर मैं नहीं उड़ सकता हूँ. I will be crawling, मैं रेंग सकता हूँ. There are differences. अगर आपको उड़ने से मुराद ये है कि you need to grow your organization. आपका organization grow होना, पैसे कमाना है, market reach होना है, आपका नाम होना है, शोहरत होना है, whatever it is. So hard work and long hours is not a compromise. You don't have any other option. There will be uncertainty in your journey. Markets, customer preferences and external affairs. External affairs से मुराद ये है कि अगर आप geopolitical situation आज देखेंगे, the international world today is pointing their fingers towards India. Everybody is seeing their India as a potential nation where यहाँ पे talent है, skills है, लेकिन we basically in the sense we are not realizing the real potential. अपना जो potential है यहाँ की resources का अपने को अंदाज़ा नहीं है. So geopolitical situation आपको जो है challenges देखना पड़ता है. Responsibility over everything. So you have to make sure you're taking the responsibility of an organization. सिर्फ ऑफिस खोलने से, बिजनेस कार्ड बना से, कंपनी खोलने से, रजिस्टर कराने से नहीं चलती है. Each day, each minute you have to move forward. Now going to the next slide. I've defined some 10 points why you need to do business. भाई एक वजह होना चाहिए. अगर आप बिना वजह के जो है बिजनेस कर रहे हैं, सो मतलब नहीं बना, मैंने नहीं बना, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उसमें पैशन नहीं आता. आप एक ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, या आप एक स्कूल खोल रहे हैं, या एक
अबाए की शॉप खोल रहे हैं या फिर शौरमे की जो है एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, फास्ट फूड खोल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, देयर शुड बी अ पर्पस विच इज मिनिमम इन द मुस्लिम कम्युनिटी, वेरी मिनिमम. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. पर्पस से मुराद ये है कि उर्दू में अगर उसको बोलेंगे तो मकसद, आपका मकसद क्या है? अच्छा खाना खिलाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनाना. सो यू हैव टू डिफाइन दैट सम पर्पस ऑफ इट. एक पर्पस आपको, एक थर्स्ट रहती है अंदर. दैट पर्पस विल ड्राइव यू फॉरवर्ड. Starting and running a business can be a deeply rewarding endeavor, but personally and professionally some compelling things should be there. Financial independence आपको अगर चाहिए तो आपको सैलरी से, जॉब से नहीं मिल सकता. You need to understand. फाइनेंशियल अगर आपको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, आप 1 लाख पर मंथ की जॉब करो या 5 लाख पर मंथ की जॉब करो, अकॉर्डिंग टू योर सैलरी आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपके जो है ज़रूरियात चेंज होंगे. सो दैट विल नेवर एंड. जॉब एंड बिजनेस में फ़र्क यही है. If even you are doing a job, but your mindset should be an entrepreneur का mindset रहना. Your mindset should be a mindset of an entrepreneur, of a businessman. आप हमेशा फायदे और नुकसान की बात सोचते रहना. Pursue your passion or purpose. This should be the driving force. You need to turn ideas into reality. You need to work on what you love, what makes an impact. Third thing is freedom and flexibility. Business में आपको freedom मिलता है. You can travel the world. As 24 years, 22 years के young chaps are doing business. I am really surprised. We missed that era. Today I am in 50 plus, so we missed that era. Today 22 years, 24 years के chaps, they are making 5 crores a year. But just by simple one idea solve कर रहे हैं लोग. One single idea. कोई बड़ी मैजिक नहीं कर रहे हैं लोग. उर्दू में कोई जादूगर नहीं है. कहीं से जाके जो है कहीं पैसा लूट के नहीं आ रहे हैं बैंक से. They are literally making legal and legitimate money. टैंजिबल लेजिटिमेट मनी कमिंग टू देयर बैंक अकाउंट, जिसमें से एक भी पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ नहीं है. मिनिमम 5 से 7 करोड़ कमा रहा बच्चा. अशनीर ग्रोवर एक यंग एंटरप्रेन्योर है. ही इज़ एन एक्स IIT ग्रेजुएट हु हैज स्टार्टेड फोन पे. तो उसका एक इंटरव्यू बैंगलोर के जो है एक चैप से था. बैंगलोर यूथ यूट्यूबर है. सो ही वॉज इंटरव्यूइंग हिम. सो अशनीर ग्रोवर आस्क्ड हिम कि भाई हाउ मच यू आर अर्निंग एज अ यूट्यूबर. He said, sir, I'm not convinced. I'm earning 40 crores per year. I'm not convinced. The answer is, I'm not convinced. I'm earning 40 crores. तो अशनीर ग्रोवर जैसा बंदा परेशान हो गया आंसर से. This is the kind of freedom. पैसा कमाना गलत बात नहीं है. Islam doesn't stops you from earning money. Islam motivates you. Islam gives you complete freedom and permission to earn legal halal money. You can create opportunities for others, by the way. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है जिसमें 25 लोग काम कर रहे हैं, 40 people are earning, 40 people are working. So just imagine कि आप 40 लोगों के इनकम का जरिया है your organization. So it's a big thing. You are creating opportunities for others. Challenges and personal growth. आप challenges face करना सीखते, अपना घर के माहौल को empower करते, and then you personally grow as a person. आपके में एक confidence आता जब challenges solve करते, comfort level आप छोड़ देते. Legacy and long term impact. Even if you leave this world, your legacy will be there. अरे बड़ा बेहतरीन बंदा था, businessman था. So people will remember your legacy. What is it that we are leaving behind? So suppose after Bill Gates, who will remember him? Every person will remember Microsoft, Bill Gates, right? So that's the thing. Financial security आपको मिलती है, stability मिलती है आपको. If you do a proper business, innovation and creativity का आपको मौका मिलता. Every organization needs to be creative and innovative. You cannot stop locally. आपको global reach का impact मिल सकता possibility. You can sell in Middle East, you can sell in local market, you can sell in India national wise, you can sell anywhere in the world, just if you do proper planning. Personal fulfillment. The most important thing is आपको इत्मीनान मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ. Really I'm doing something. Job कर रहा हूँ, 8 to 5 salary आ रही है, 40,000, 50,000, 60,000. That's it. So आपको खुद एक comfort नहीं मिलता. और अगर आप वो ट्रैप में फंस गए, वर्क की ट्रैप में फंस गए, तो यू कैनॉट कम बैक. इट विल टेक यू मिनिमम 10 years टू थिंक अराउंड. सो यू हैव टू मेक श्योर कि अब आपका माइंड सेट शुड बी, शुड आई डू बिजनेस एंड वाई शुड आई डू बिजनेस. नाउ आई विल टेक यू टू ए टूर. आई एम ट्राइंग टू गिव यू हाउ द बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स. इफ यू लुक एट दीज स्लाइड्स, द वर्ल्ड ऑफ वर्क और बिजनेस, अगर आप ये देखेंगे, सपोज एनीबडी इज अ सेलर हियर एंड आई एम अ कस्टमर हियर. So suppose my kid, अगर मेरे बच्चे को एडमिशन दिलाना है, so मैं कस्टमर हूँ. Who is my supplier? The school or college or institution or academy. So there is a relation.
there is a relation between a customer and a supplier. The entire world, from the beginning of the mankind till the end of the mankind, this relation cannot be broken. You need to make sure you are on which side. Are you a customer or you a supplier? अगर आप जहन बनाएंगे, businessman is always a supplier. A businessman is at the minimum a customer. No doubt he purchases things. Lekin end of the day, the things that he does is he sells ideas, he sells products, he sells services. So supplier is better than a customer. Customer consumes and customer spends. Supplier earns and supplier innovates. So supplier is much bigger than a customer and a consumer. But most of us are in the customer side. We are consuming, we are spending money. Khana, pina, we are spending money. Khana, roti, kapda, makan pe apan busy hai. So we are not thinking more than that. You need to think how a supplier can I become a supplier. So there is a relation between a customer and a supplier. Now, as a customer, there are three things that we do. And as well as the supplier, there are three things they sell. So the relation between the customer and supplier के जो relation है उसके बीच में तीन चीजें हैं. पहली चीज ये है कि मैं क्या खरीदूंगा. Either I will buy a product, right? एक product खरीदूंगा. Or else मैं मोबाइल को बनाने जाऊंगा. Service, right? So there are three kind of business models. Either I purchase a product, or either I buy a service, or I sell a service. The third thing is, as we go forward, you will realize what I mean to say. So when we purchase a product, हम क्या करते हैं? What do we do as a customer? We go to a retail outlet. Jagdish Market जाते हैं, कोठी जाते हैं. You go to any Bajaj supermarket, Bajaj retail outlet में जाते हैं. We go and purchase a mobile. Or else we go to a mega store. These are the resources. Or else we can also purchase from a wholesaler. अगर आपको 10 मोबाइल लेना है, you can even go to a wholesaler. Or else today things have changed. You have to go online. आप price comparison करते हैं. अगर आप retail में भी जा रहे हैं, तो आप Amazon पे price check करके आप negotiate करने जाते हैं. So these are the supplier areas where a customer purchase things. Retail outlet से खरीदता है, या mega store से लेता है, या wholesale से लेता है, या online से लेता है. Now if you go to a service, what happens next? You go to a mobile repair shop, service provider. यहाँ पे फिर पैसे की बात हो रही. Service provider is bigger than a customer. तो आप हमेशा right side of the screen की focus करिए आप. How do I be on the right side of history? Be on the supplier side, be on the innovator side, be on the manufacturing side, be on the service provider side. Or else you go to, अगर आपको basically कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट देना है मोबाइल्स का, मोबाइल जो है आपका मोबाइल का बिजनेस है, और यू वांट टू गिव ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग लैपटॉप्स एंड पीसीज और सोफाज, वॉट एवर इट इज, यू गो टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ मेगा सर्विस. ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इज ऑल्सो ए सर्विस. आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों के स्किल्स बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं. आई गिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, आई गिव लीडरशिप ट्रेनिंग. तो आप एंड ऑफ द डे यू आर अ सप्लायर फॉर दीज सर्विसेज. और एल्स यू कंप्लीटली आउटसोर्स इट. अपनी कंपनी, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? They outsource the complete model to a service provider. The third thing which I was saying is, what could be the third thing? It's a solution. Enterprise customers. अब जैसे basically ये exhibition है. Exhibition is not a product, not a service. It is a solution. Enterprise thing है. There are 50 vendors here managing this complete thing for the past 1 month. You can ask Fahim bhai, you can ask Ejaz bhai, you can ask the entire team how hectic it is. So three things a customer buys and a supplier sells: a product, a service, or a solution. So solution can be sold from consultants like us. We design solutions. Solutions can be sold and procured from integrators, from developers, or from project management teams. अगर आपका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, आप एक मेगा अपार्टमेंट बना रहे हैं जिसमें 300 अपार्टमेंट्स है, what do you go to? You do project management, you go to developers and do that, execute that project. So you have to think this way. Why I'm showing you this is, मैं आपके ज़हन की बात कर रहा हूँ. You need to understand the basics of business. Why nations become superpowers? Anybody can answer that? Why countries become superpowers? Before 1857, India was a superpower. How did India become a superpower and how? Business. Yes, business. And how can business atmosphere be created? By institutions, by trainings, by consulting, by interacting, by creating
The thought कि भाई आपको entrepreneur बनना है, you have to become a businessman. You can work for initial 10 years of your life, लेकिन अपने बच्चों को बताइए कि you cannot survive with this job for lifelong. और आजकल के हालात में तो it is nearly going to be impossible for the next after 5 years. क्या होने वाला है? We have no idea. So you have to be a businessman or a businesswoman end of the day. Make sure you are landing there. Now, if you combine this, there is still one more big area where people are earning money. Very big area. अगर कस्टमर को जो है प्रोडक्ट खरीदना है, सर्विस खरीदना है या सोल्यूशन लेना है, तो these all three segments connect through a distributor to the supplier. खासतौर से जो लोग रिटेल में है, you need to understand कि आपको जो रिटेल की प्राइस मिल रही डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छी मिलती और उससे अच्छी प्राइस आपको डायरेक्ट सप्लायर से मिलती. सो ये सप्लाई चेन के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करिए आप डायरेक्टली अगर रिटेल से लेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं. यू गो टू अ मेगा स्टोर, आप 10% कम ले रहे हैं. यू गो टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, 5% कम दे रहे हैं. और अगर आप डायरेक्ट सप्लायर दे रहे हैं तो 2% एक्स्ट्रा प्राइस में आपको मिल सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फायदा कहाँ है. हमेशा फायदे की बात सोचिए. विदाउट फायदा आप जिंदगी नहीं गुजारा है एक्चुअली. साइंस सेज एंड कुरान कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दैट कि वी आर अ सोशल एनिमल. So to come out of that bubble of social being a social animal, human being is the only species that exists to sell. हम बेचने के बगैर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं. We need to learn how to sell, how to market. Then only the earnings come, right? So you have to have that mindset. Human beings are the only species जहाँ पे मजबूरन हमको सेल करके जीना पड़ता है. जंगल का बादशाह बब्बर शेर बोलते हैं. So he doesn't need to sell anything. उसका मूड आया, शिकार करा, खाना खा लिया, खत्म. नो टेंशंस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी. बट यू एंड मी एज ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव अ डिफरेंट इकोसिस्टम. वी हैव टू सेल एंड बाय. वी कैन नॉट सिंपली से झाड़ के नीचे बैठाओ, सेब गिर गया मैं खा लूंगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर इन लाइफ. इट डिड नॉट हैपन विद द फर्स्ट मैन. इट विल नॉट इवन हैपन विद द लास्ट मैन. सो आई होप दिस वॉज क्लियर, गिविंग यू द वेरी रूट्स ऑफ बिजनेस. दैट मीन्स अगर आप देखेंगे, इफ यू रिकॉल बैक, गो टू ईयर 2000. Whoever remembers year 2000, 2001, 2002, that was the initial of email आना शुरू हुआ, social media application शुरू हुए, Facebook start हुआ and all those things. So things started moving towards digital. What is digital is everything that is available on internet is called digital information. आपका product, it is available on a digital platform or also in a retail outlet. So things have moved towards digital transformation. और अगर आप बिजनेसमैन है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी स्ट्रांग. इफ यू आर नॉट ऑनलाइन, यू हार्डली एग्जिस्ट. आपका छोटे से छोटा कारोबार है, यू नीड टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, यू नीड टू हैव अ बेसिक वेबसाइट एंड यू नीड टू बी एक्टिव देयर. यू नीड टू बी अवेलेबल देयर. इफ यू आर नॉट अवेलेबल देयर, इफ यू आर नॉट ऑनलाइन, इट डजंट मीन कि वेबसाइट खोल दिए छोड़ दिए. यू नीड टू शो देयर एक्टिविटी, यू नीड टू शो देयर मूवमेंट डेली, ट्वाइस इन ए वीक और वंस इन ए वीक, 4 times in a month minimum. You need to show some activity or the other there. That means you exist. Otherwise what? You hardly exist. Nobody will recognize you. आप बेचेंगे किसको? And competition ऐसा है कि hardcore competition. If you want to buy a flat, हैदराबाद में अगर आपको फ्लैट खरीदना है 3 bedroom का, you just खाली एक जो है WhatsApp मैसेज एक करिए एक ग्रुप में, आपको 40 कॉल आना शुरू होते for the next 40 hours, 24 hours. 40 कॉल आना शुरू होते. एक आपके सिंगल मैसेज से यू विल हैव 40 डिफरेंट सप्लायर्स कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर 2% to 4%. दैट्स इट. तो आप एग्जिस्ट कैसे? हाउ डू यू सेल? यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल, यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अब जब आप मेरे को कॉल करें फॉर द फ्लैट, देन आई विल गो टू योर सोशल मीडिया हैंडल्स, आई विल गो थ्रू द इंटरनेट, आई विल सर्च अबाउट यू, आई विल सी हाउ एक्टिव यू आर, आई विल सी द फीडबैक ऑफ पीपल बाइंग फ्रॉम यू. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. How satisfied is your customer for me to take a decision to buy a flat from you? So this is all available online. Word of mouth एक ज़माने में था करता था, अरे उनसे ले लीजिए, आप बहुत अच्छा बेचते हो ना, बहुत अच्छे फ्लैट बना. वो ज़माना चले गया. I do not need to call anybody. I just go on their social media handles and check out the feedback of their customers. If there are more than 10 complaints, do not interact with that supplier. That is very critical. But if they are resolving their services, then you can move ahead. So अगर आप देखेंगे, if you go back to history, right from 1780, 1870, 1970, 2011 and 2020, these are called industrial revolutions. 1.0, जिसमें mechanization start हुआ था.
Europe has stolen technology from the world and they started mechanization of things. Mass production shuru hua. Then it went to electrification, invention of electricity, bulb. It started with there. Then automation start hua. Then year 2011, digitization complete ho gaya. You don't think कि digitization abhi chal raha hai. Digitization is finished. अगर सिर्फ encyclopedia का data आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते how big it is. Wikipedia का अगर information देंगे. So everything is digitized. Each and everything is available on internet. And from now onwards, we are moving towards very personalized humanization. Very specific oriented marketing हो रही है. I have all psychometric parameters of every person available on the internet. मेरे को मालूम है कि अगर मालूम करना है आपकी पसंद नापसंद, I can do it in the next 30 minutes. आपको क्या पसंद, आप क्या खाते, क्या पीते, कहाँ मिलते, कैसे करते, everything is available on the internet. चाहे आप चाहो या ना चाहो, that information is available. So that is very personalized selling is going on. So these are some very basic technologies that you need to know. आपको जो है aware होना ज़रूरी है. अगर आप aware नहीं है, खाली business कर रहे हैं in the age of digitization, it is not going to be possible. You will face tough times, or else you will be having dependency on your team. You should have dependency on your team. लेकिन आपके पास knowledge होना ज़रूरी है. आप technically होना ज़रूरी नहीं है. You do not need to build an Instagram page and run it. You need to have social media people there. लेकिन you should know how it functions. So these are some 10 things that you can read out, and you should know all these technologies. Basics इसके जो है आपको मालूम होना. Where do you store data? Cyber security. How secure is data? How are you taking regular backups of your data? Email communication के ethics कैसे है? Instagram manage कैसा करना है? Digital marketing कैसे करना है? All these areas. CRM, customer relationship management. अगर आप एक big organization have more than 50 employees, you should have a CRM. You should have an ERP, small application. Nothing is costly today. Everything is cheap. So very economical price में आपको solutions मिलते हैं. Now, the final slide is, as I started, business is battle. Business is jung hai. So the center guy is a warrior. He is an entrepreneur. And these are teams. These are the blocks. अगर आप इसको पढ़ेंगे हैरत करेंगे. These are the blocks of how a battle can be conquered. Jung, आपको मालूम है कैसे जीती जाती है? But in business, you don't kill your enemy. You compete with your enemy. The only difference is with the real-time war, you fight and kill the enemy. But in business, you do not kill the enemy. Automatically, they die or they vanish. But you basically compete with your competitor. He's not your enemy. I wrote here enemy because I'm talking about war. So for you to understand, I need to translate that term. So business is a battle without an enemy to kill, but a competitor to compete. That is the only thing. So with this, we can move forward. Finally, the business is a battle. If you takeaways, agar aap takeaways likhenge, but what did you listen from me? Business is a relentless battle where only the most strategic, adaptable, and resilient survives. Call to action, equip yourself with the right tools, strategies, and mindset to thrive in the competitive landscape. The third and final thing is finally thought. Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is a noise before defeat. With this, I conclude. I hope you have enjoyed. I hope I was able to give you some value out of it. Thank you so much. Jazakallah khair. These are my contacts, so if you want to reach me, I'm available for anything. Thank you.